Now, the war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. And I want to show you where these trains have been torched, because trains were clearly a sort of familiar target for these rioters, these criminal elements. Balia in Uttar Pradesh, there was a train burnt. Lakhisarai in Bihar, another train was burnt. Ara in Bihar was the 3rd train that was burnt. Samastipur, Bihar, was where the 4th train was burnt. Sikandrabad in Telangana was where a 5th train was burnt. Buxar in Bihar was there a 6th train was burnt. And at last count, about 9 trains have been burnt, leading many Indians to wonder, how can future Jawans, future soldiers, even think of burning trains and endangering the lives of thousands of passengers and inconveniencing those trying to get from one place to another, for whom such trains are basically a lifeline? How is it possible that those who aspire to defend the country could let their anger goad them into indulging in such unthinkable acts of violence? Will anyone endorse or justify this kind of violence, no matter what? Listen into some of the reactions coming in from the protesters. And remember, here on India Today, we repeat, there are legitimate concerns, there are legitimate questions, but nothing, there are no ifs and buts when it comes to damaging national property and endangering the lives of fellow Indians. Nobody will support you if you do that. देश के अंदर तानाशाही के जो रवैया इस देश की सरकार सभी संवैधानिक ताकतों से देश के छात्रों, नौजवानों, किसानों को परेशान करने पर तुली है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इस देश में छात्रों से पंगा मत लो। 1975 में छात्रों ने दिखाया है कि इंदिरा गांधी के सत्ता पर ताबूत में सिर ठोकने का तुम्हारी सरकार तानाशाही नहीं चलेगी। देश के छात्रों, हम सरकार की अपनी योजना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, जो हमारा अधिकार है वो नहीं करने दे रही है। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े हुए और उन्हें हमें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अगर है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे थे। सर, समस्या ये है, अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल में आर्मी के अंदर इंसान जाके ट्रेनिंग लेता है, तब आर्मी के बारे में समझता है। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे का मतलब पास हुआ है। इसका मतलब क्या है? कितना मेहनत किया हमने, हमारा मेहनत सब कुछ बुरा हुआ है। अभी उसको डाल के क्या करना चाहते हैं? वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा जिंदगी देखो, हमारा फैमिली का जो सिचुएशन देखो कैसे है। इतना 1.5 ईयर से कितना खर्चा होता है। हम हमारा रनिंग पूरा किया और मेडिकल टेस्ट भी पूरा किया, 2 साल वेस्ट भी किया। अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल। क्या हम क्या कैसा बकवास देख रहे हैं क्या हम उसको? सर, हमारी मांग यही है कि सर हमारा जो रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है सर पिछले 1.5 साल से, उसको जल्द से जल्द कराया जा रहा है। सर, हमारा फिजिकल हुआ, उसके बाद सर हमारा मेडिकल हुआ। सर, कोई आसान बात नहीं है सर फिजिकल निकालना। सर, हमारा मेडिकल हुआ, सर अभी हमारा रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है, जो सर इन्होंने 4 से 5 बार सर पोस्टपोन कर दिया है। अभी बोल रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा। सर, हम यही चाहते हैं हमारा एग्जाम जल्द से जल्द हो, और उसके बाद सर जो टीओडी लागू किया है सर, इसको निरस्त किया जाए। सर, हमने कितना खर्चा कर दिया। हमारे घर वाले को इतने ज्यादा अमीर नहीं है, हम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है। सर, मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ आर्मी पे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बाकी वाले क्या पैसा नहीं कमा रहे? उन्हें पैसा नहीं मिला। जेकेपी क्यों है? 1.5 साल से क्लासेस ले रहे हैं अपनी रिटर्न एग्जाम्स के लिए। हमने इतने पैसे दे दिए। सर, हम कोई भी इतनी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हम सब मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं। सर, हमारे साथ ये धोखा हुआ है। हमारा रिटर्न कैंसिल किया, अभी हमारी रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी है। हमें वो रिक्रूटमेंट वापस चाहिए सर। And just so every Indian today knows the kind of damage that has been caused by these criminal elements. You know, many of them sound angry, many of them are legitimate aspirants who have been misinformed about Agnipath. But nobody is going to justify the actions that they've taken in damaging public property. Look at what things looked like before and after the actions taken by rioters. On Friday morning, in a matter of hours, from Patna to Sikandrabad, the Agnipath rioting vandalized over 9 railway stations in the country. They torched trains, reduced stations to rubble, and put passengers' lives at risk. On the left-hand side of your screen is what the station in Sikandrabad looked like earlier and what
it looked like today. One of the most well-planned, most organized, clean and safe stations has become a flaming mess. Protesting against the government's new Agnipath scheme, this is what they did to that railway station. The protesters also indulged in stone pelting and setting on fire a couple of bogies of a train. Protesters also damaged properties of the railways. This is in Lakhisarai in Bihar. Images of what the train station looks like on a normal day compared to what it looks like today. This is Lakhisarai in Bihar, a state which has borne the brunt of this criminal rioting by those who are using resentment over Agnipath, misinformation over Agnipath, to indulge in this disgusting, sickening violence that has only harmed their own future prospects and that of their families and harmed their fellow Indians. These are images from Lakhisarai in Bihar. The mob set 3 trains on fire in this station, destroyed the station, burnt tires on railway tracks. This is Balia. This is the Balia railway station in Uttar Pradesh. As you can see, a lovely, small town railway station there. And here's what it looks like on the right-hand side of your screen after those criminal rioters had their way with it. This is Balia in Uttar Pradesh. This is Ara now in Bihar. This is what the Ara station looks like on a normal, peaceful day. And on the right-hand side of your screen, the Ara station in Bihar after Agnipath rioters entered and had their way with the trains parked there. The before and after of this sickening day of Agnipath riots lays bare the kind of damage these people have done. It has not been assessed, what the price and the cost of this damage is, but it doesn't take rocket science to assess that this is many tens or hundreds of crores of damage that has already been done by these people. Who will pay for it? Their futures are already gone because they've all been probably identified by the government. There is no way in hell they will be perhaps allowed into the defense forces after this. All of it, what was the point? What was the point of taking any legitimate concerns and rage and turning it into anti-national violence? The word anti-national is used loosely in these politically vitiated times. But if you harm your own fellow people, if you endanger the lives of your neighbors, if you inconvenience the Janta, then you are anti-national. Let that be very clear. And you have no place in the defense forces.